जी इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है फैज़ान तारिक और सीजर कैपिटल के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, रशिया यूक्रेन वॉर which has caused havoc in the commodities market और जिसकी वजह से there has been a round of spiraling inflation across the globe including Pakistan has turned 1 year old and shows no sign of stopping. Overall, it's a stalemate. Russians have resorted to aerial bombing after taking parts of eastern Ukraine, while Ukraine has been able to fend off attack on mainland Ukraine, all the while regaining some territory. So what does the future hold for this conflict? एक साइड पे China and India have directly and indirectly criticized Russian aggression, suggesting Russia to end the war, but has sadly fallen on deaf ears, and Russia seems in no mood of ending it anytime soon. On the other hand, Europeans and Americans are committed to help Ukraine until Russia is completely driven out. मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करने के साथ साथ वो यूक्रेनियन फोर्सेस को एक्टिवली ट्रेन भी कर रहे हैं. So by the looks of it, Europeans and Americans seem committed to making Ukraine another Afghanistan for Russia. And if God forbid NATO troops get pulled into the war, we could see the situation turn into a major global conflict. अच्छा जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ डिक्लाइंड ईयर ऑन ईयर with the continued political uncertainty and a disastrous economy. साल 2022 लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का साल रहा है पिछले 10 सालों में, with just $1.2 billion in net inflows. इन्वेस्टमेंट भी कॉन्सेंट्रेटेड रही है रवायती सेक्टर्स में, पावर सेक्टर मतलब बिजली घरों में और बैंकिंग एंड फाइनेंस में. लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक मेजर वजह सीपैक का स्लो डाउन भी है. सियासी और मुआशी सूरत हाल को देखते हुए 2023 भी कोई अच्छा साल नहीं नज़र आता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए. जी तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि 23 जनवरी 2023 को अनाउंस की गई और उसमें शरह सूद को बढ़ाने का फैसला किया गया 1% से बाय 1%, टेकिंग द पॉलिसी रेट सेट बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू 17%. This was much in line with the market's expectations as high inflation continues unabated. And going forward, inflation is not coming down anytime soon. As Pakistan goes back to the IMF program, energy prices are set to increase. Bijli, gas, petrol, diesel all set to go up and currency to be let loose so that it is market based. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए there is still room for another round of interest rate increases that the State Bank of Pakistan may follow with. जी तो क्रूड ऑयल, खाम तेल, ऐसी कमोडिटी जिसकी कीमत में उतार चढ़ाव का असर हर पाकिस्तानी के रहन सहन और कारोबार पर पड़ता है. और ना ही सिर्फ ये बल्कि मुल्क की तकरीबन 30% दरामदात यानी इंपोर्ट्स का हिस्सा होने की वजह से मुल्क में डॉलर की मांग का मेजर रीज़न है क्रूड ऑयल. 2023 का आगाज शूटिंग ऑयल प्राइसेस से हुआ है और इसकी एक वजह है चाइना पुटिंग एन एंड टू इट्स जीरो कोविड पॉलिसी. पहली बार 3 सालों में जब से कोविड-19 का आगाज हुआ है
बीजिंग ने अपने बॉर्डर्स मुकम्मल तौर पर खोल दिए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल ऑयल डिमांड इज सेट टू रीच एन ऑल टाइम हाई in the year 2023 as China reopens and sets to revive its economy. दूसरी वजह for rising oil prices is the tight supply situation due to sanctions on Russia. और खाली existing sanctions का मसला नहीं, बल्कि फरवरी के महीने में further sanctions on refined Russian petroleum products are expected to come into play. Other oil producing and exporting countries are also expected to stick with their plan of reduced oil production to keep the prices elevated. तेल की कीमतों में बढ़ाव और रुपए की कदर में कमी पाकिस्तानियों के लिए एक और महंगाई के तूफान का अंदेशा है। अच्छा जी, खुर्दनी तेल यानी एडिबल ऑयल की बात करें, जो कि पाकिस्तान पाम ऑयल की शक्ल में इंपोर्ट करता है, 40% गिर चुका है अपनी कीमत में इंटरनेशनली, लेकिन सिर्फ 3% लोकली। और इसकी वजह डॉलर की निस्बत रुपए की कदर में शदीद गिराव, पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपसर्ज, elevating palm oil distribution costs. So looking forward, floods in Malaysia, war in Ukraine, with Ukraine being one of the largest producer and exporter of sunflower seed and sunflower oil, and curbs on Indonesian palm oil exports, all point out to an upside in international palm oil prices. और इसमें ऐड करें रुपए पे प्रेशर, तो Pakistanis are not anytime soon getting a breather on food inflation or their discretionary income. अच्छा, राइस की बात कर लें तो nearly 1/3 of production was washed away in floods. और internationally, basmati and coarse varieties averaged the highest unit prices in over a decade. So again, no respite for the Pakistani food basket price levels and the soaring inflation. Information and communication technology sector, the shining star of Pakistan's exports in the recent years, has had a rather dismal start to the fiscal year 2023. पिछले 6 महीनों की ICT एक्सपोर्ट्स को अगर इन टोटल देखा जाए तो वो सिर्फ 2% बढ़ी है compared to the previous year, which is abysmally low compared to the average of approximately 25% year-on-year growth we have witnessed in the last 5 fiscal years. So can the ICT exports make a comeback in the coming months? पाकिस्तान की ICT exports के main hubs नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में as per latest forecasts recession के असर कम नजर आ रहे हैं। एक्सचेंज रेट में करेक्शन के बाद पाकिस्तानी exports would become even more cheaper for the foreign clients. लिहाजा possibility for Pakistani ICT exporters to gain more market share. Let's see how things turn out for the ICT sector. अच्छा जी, last but not the least, let's have a quick snapshot of the cement industry. Sales volume have gone down by 23% in the last 6 months. लेकिन due to strong price hikes to overcome the decline in sales, the cement industry has managed to post a 5% increase year on year in net profits. Now going forward, because all building materials have skyrocketed in price,
and government's development spending is significantly lacking behind, as discussed in our previous episode. Demand recovery in the near future doesn't seem on the horizon. And add to that the developing shortage of imported raw materials due to LC restrictions. Things don't seem to be going in the cement industry's favor anytime soon.